to give the effect of the adjustment entry, how to do its treatment, this needs to be understood. So, in this video, I will be taking Calcutta University previous year question 2019 of final account for sole proprietorship business, which is most probable to repeat for the Bcom semester 1 final exam 2024-2025. First, understand what is adjustment entries. Many times it happens that after preparing your journal entries, then posting in the ledger and preparing on the trial balance, some more information comes in whose effect is not given in the trial balance. This information is nothing but adjustment entries. Now see here. Here I have taken CU Bcom Honours previous year question 2019, which is most probable that this type of question will be repeated again for this Bcom semester 1 2024. Now this is the trial balance of Mr. SK Sen as on 31st December 2022. Now the trial balance is given, note down it, okay. Pause the video and you take a screenshot or note down the question. Along with this, see the additional information, which is nothing but the adjustment entries. There are total 6 adjustment entries for this question. So, number 1 is included among debtors is rupees 4,000 due from R Das and included among creditors rupees 3,000 due to him. So, that means that this SK Das, to him there is a debtor who is R, who will be giving him 4,000, that is to SK Das he will be getting 4,000 from R, and to the same person R, this SK Das is liable to give rupees 3,000. So, this is actually the adjustment entry for mutual indebtedness. Number 2 is provision for doubtful debt is to be created at 10% and provision for discount at 5% on debtors. Number 3, personal purchase amounting to rupees 2,000 had been included in the purchase day book. Number 4, depreciate furniture and machinery at 10% and 15% per annum respectively. Number 5, interest on bank loan is outstanding for 2 months, and number 6 is stock as on 31st December 2022 was rupees 65,000. So, that means it is a closing stock. Now, simply you are asked to prepare the trading and PL account for the year ended 31st December 22 and the balance sheet as on that date. The first adjustment entry is for mutual indebtedness. So, here the effect actually will be given in the balance sheet. How we will be giving is deduct the smaller amount from both the debtor and the creditor. So, in the question it was given the amount, both the two amount was rupees 4,000 and 3,000. So, क्या था कि एक डेटर से मुझे मिलना था 4,000 और क्रेडिटर को देना है हमें 3,000. So, उसमें से जो स्मॉलर अमाउंट है उसे हमें लेना है, that is rupees 3,000, and we will be deducting the smaller amount from debtor and we will deduct it from creditor. The second adjustment entry is provision for doubtful debt and provision for discount. So, number 1 is provision for doubtful debt to be created at the rate of 10%. So, first we have to see that what is the sundry debtor given in the question. So, given is rupees 35,000. So, first we have to minus this mutual indebtedness that we saw in note 1, that is 3,000. तो इसे minus कर लेंगे तो कितना हो गया 32,000. So, this is the sundry debtor right now. Now, इस पे हमें bad debt का provision create करना है. So, that is at the rate of 10% on 32,000, that would be 3,200. So, इसका effect एक जाएगा debit side of the PL and दूसरा जाएगा balance sheet में हम debtor से इसे minus करके दिखाएंगे. Remember one thing, every effect of the adjustment entries will be going at 2 places. So, यहाँ पे भी similarly एक PL के debit side में जाएगा, हम इसे दिखाएंगे, और एक balance sheet में हम debtor से minus करके दिखाएंगे. For the second part, we have to create provision for discount at the rate of 5% on debtor. So, this discount will be given after mutual indebtedness, after provision for that debt. So, अब तक हमने क्या देखा कि sundry debtor 35,000 था, we deducted mutual indebtedness, that is 3,000, 32,000. After from this we deducted the provision that we created for bad debt 3,200, and the amount right now is 28,800. From this we will be creating the provision for discount, that would be 28,800 पे 5%, that is 1,440. इसका इफेक्ट क्या होगा, एक जाएगा PL डेबिट साइड में and दूसरा again we will be deducting it from the debtor. This would be after the provision for bad debt. Number 3,
The third adjustment is for personal purchase which was included in the purchase day book. This is really important. Any personal purchase which is included in the purchase, this personal purchase will not be included actually. This personal purchase will be treated as drawing and this effect will be given as, हम इसे माइनस करेंगे परचेज से, ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज से माइनस कर देंगे एंड बैलेंस शीट में हम इसे ड्राइंग्स के साथ ऐड करके दिखाएंगे. The fourth adjustment is regarding depreciation. So we have asked to provide depreciation on furniture at the rate of 10% per annum. Furniture का वैल्यू कितना है 6000 and इस पे we have to charge 10% depreciation per annum, that stands at 600. So what would be the effect? The effect would be PL account में debit side में हम 600 depreciation show करेंगे for furniture and we will go to the balance sheet and asset side में furniture से हम depreciation 600 minus करके दिखाएंगे. So we will deduct 600 from furniture in balance sheet. Similarly, in case of machinery, depreciation is at the rate of 15% per annum. Machinery costing is, the value is given 8000, it's pay 15%, that is 1200. So the effect will be again similar to the above one. PL के debit side में depreciation show करेंगे on machinery and we'll go to the machinery. In the balance sheet, we'll go to the asset side. From machinery, we'll deduct this depreciation. The fifth adjustment entry is interest on bank loan outstanding for 2 months. So the bank loan, so the business has taken a bank loan but the business has not yet given the interest on this loan and this outstanding is for 2 months. So the outstanding interest on bank loan will be, how much is the bank loan is 20,000 which is given in the question into 6% which is the total interest for the whole year into 2 by 12. So that will be equal to rupees 200. This is the interest on bank loan which is outstanding. Okay, so the effect, what will be the effect of this? एक इफेक्ट इसका जाएगा पीएल अकाउंट में, डेबिट साइड में हम इसको दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 200 एंड द सेकंड इफेक्ट विल बी कमिंग इन द बैलेंस शीट अंडर द लायबिलिटी साइड. दिस विल बी गिवन एज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. सो दिस इज अ लायबिलिटी, सो इट विल बी कमिंग इन बैलेंस शीट. And finally, number 6 is the closing stock of this for the year. So obviously we know that the closing stock effect, one is we write it in the credit side of the trading account and another it will be shown in the asset side of the balance sheet. So we understood all the 6 adjustment entries और इसका effect कैसे हम देंगे. इसके बाद हम आ जाएंगे trading account और PL account में. So we'll write in the, so Mr. S.K. Sen trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2022. So सबसे पहले to opening stock, it is given in the question 28,000. उसके बाद to purchase. Purchase से हम return minus करेंगे which is given in the question, that is 3,200. उसके बाद we already have seen this, minus करेंगे पर्सनल परचेज दैट इज ड्राइंग जो हमने अभी अभी एडजस्टमेंट में देख चुका है नोट में 2000 माइनस करके द नेट परचेज इज नाउ दिस. ओके, नेक्स्ट टू फ्रेट एंड कैरेज 9700. आफ्टर दिस वी सी केयरफुली सी इन द क्वेश्चन देयर इज नो अदर आइटम्स दैट विल बी कमिंग इन द ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. नाउ नेक्स्ट लेट अस गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. शुरू करेंगे बाय सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन 2,10,000. अगेन इन द क्वेश्चन देयर इज सम सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे. So the net sales is 2,05,800. Next will be by closing stock. This we have already given in the adjustments 65,000. So add करेंगे credit side debit side add करेंगे. We see that the credit side is greater than debit side. तो आ गया gross profit that is 63,300. So this gross profit will be carried down by gross profit brought down. Debit side में आ जाएंगे. सारे जो expenses जो trading account में हमने नहीं लिखा है, all the other indirect expenses हम PL account में लिख देंगे. So एक एक करके लिखते हैं. टू रेंट एंड टैक्सेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 3600. फिर क्या आएगा, सैलरीज एंड वेजेस है, देखो क्वेश्चन में दिया है 15,300. उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1000 एंड इसके साथ जो हमने आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हमने अभी भी किया वर्किंग में एडजस्टमेंट में जो देखा हमने 200 इसे ऐड कर देंगे. सो आगे 1200. उसके बाद देखो क्वेश्चन में है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, फिर आ गया डिस्काउंट अलाउड, फिर आ गया जनरल एक्सपेंसेस, to insurance, to postage and telegram, to travelling expenses. After this see depreciation. So adjustment में लिखा था कि हमें depreciation पास करना है, अभी भी हमने कैलकुलेट करके भी देख चुका है वर्किंग नोट्स में. सो मशीनरी का depreciation कितना निकला था 1200 एंड फर्नीचर का 600. सो टोटल 1800. ओके, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट. ये अगेन दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने अभी भी कैलकुलेट कर चुका है, that is 3,200. Next, to provision for discount, that is we calculated right now 1440.
सो एक एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट हमने पीएल में लिखा है और दूसरा हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसे डेटा से माइनस करके दिखाएंगे, अभी भी मैंने बताया था। क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। नाउ सी इन द क्वेश्चन खाली दो ही इनडायरेक्ट इनकम्स है, एक है मिसलेनियस इनकम और दूसरा है बाय डिस्काउंट रिसीव। लिख लिया हमने। फाइनली क्या करना है हमें, क्रेडिट साइड को ऐड कर लिया, डेबिट साइड को ऐड कर दिया। सो वी सी देयर इज अ नेट प्रॉफिट। सो दिस नेट प्रॉफिट will be transferred to the capital account, that is 17,660। फिर देख लो बैलेंस शीट एज एट दिसंबर 2022। ठीक है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द एसेट साइड। एसेट में मशीनरी आ गया 8000, तो हमने एक डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एक एडजस्टमेंट हमने पीएल में लिखा है ऑलरेडी, तो दूसरा इससे माइनस करके दिखाएंगे, 1200 माइनस कर दिया, दिस इज द अमाउंट। फिर फर्नीचर लिखेंगे उसका अमाउंट और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जो एडजस्टमेंट ने हमें कैलकुलेट किया। एक पीएल में हमने शो कर दिया है, दूसरा यहाँ पे हो गया। फिर फाइनली क्लोजिंग स्टॉक दैट इज नथिंग बट योर स्टॉक इन ट्रेड, ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया है और दूसरा यहाँ पे एसेट साइड में 65,000। फाइनली सन्ड्री डेटर्स एक एक करके दिखाएंगे पूरा का पूरा। सन्ड्री डेटर्स था 35,000, उससे हमने जो म्यूचुअल सेट ऑफ किया 3000, जो फर्स्ट वर्किंग नोट हमने किया, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, माइनस कर दिया, दिस इज द फाइनल अमाउंट। एंड फाइनली सीन द क्वेश्चन, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 6,000 2,000 हो गया एसेट साइड। फिर आ जाओ लायबिलिटी साइड में। सो सबसे पहले कैपिटल 60,000 गिवन इन द क्वेश्चन, उससे कैपिटल से माइनस क्या होता है, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग एक 5,800 जो गिवन था क्वेश्चन में, एंड दूसरा जो हमने एडजस्टमेंट इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था, सो दैट इज 2000 जो वर्किंग नोट 2 था, राइट। सो 5,800 प्लस 2000 आ गया 7,800। इसके साथ हम नेट प्रॉफिट जो हमने अभी अभी पीएल से हमने जो ट्रांसफर होके आया उसे हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी में आ जाएगा जो लोन है 6% बैंक लोन, वो लिख लिया। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो अभी हमने इसका एडजस्टमेंट एंट्री किया, तो एक इसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी पीएल में दे दिया है और दूसरा यहाँ पे लायबिलिटी में शो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, दिया है क्वेश्चन में 25,500, एंड इसके बाद हमने जो सेट ऑफ करना है हमें म्यूचुअल इंडेटनेस का जो सेट ऑफ करना था वो हम कर देंगे, दिस इज द फाइनल अमाउंट। बस स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक पूरा कैलकुलेट हो गया। सो फाइनल जो काम हमें करना है वो हमें एसेट साइड ऐड करना है और लायबिलिटी साइड ऐड करना है। सो दैट इज, तो ये और ये अगर मैच हो गया सो वील अंडरस्टैंड दैट वी हैव डन द क्वेश्चन करेक्टली।